Welcome to Literary Heights. मैं मुजाहिद हुसैन going to discuss Middle English period और Anglo-Norman period. गुफ्तगू का खुलासा आपके सामने है। चार चीज़ें डिस्कस करेंगे। नंबर 1 Anglo-Normans, नंबर 2 Literary Trends of Middle English period, number 3 Figures and their famous works, and number 4 The Prologue to the Canterbury Tales. बिफोर आई स्टार्ट, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अभी जाकर देख लीजिए। एंग्लो नॉर्मन्स। The Normans from Normandy attacked England and replaced English by French and later by Latin. This conquest, known as Norman Conquest, which occurred in 1066, ended Roman Empire, and afterwards Europe established a Christian civilization. French remained the official language of England until 1731. John of Treviso translates Polychronicon of Ralph Fijan, outlining that how, ever since the Normans came to England, Englishmen had been forced to leave their native language and do everything in French, and that the children of gentlemen were taught to speak French from infancy. What we can learn yet? नॉर्मन्स इंग्लैंड पर हमला आवर हुए, इंग्लिश को फ्रेंच और बाद में लैटिन से रिप्लेस कर दिया गया, रोमन एम्पायर ख़त्म हो गई और यूरोप में क्रिश्चियन सिविलाइजेशन कायम हो गई। सेकंड थिंग, चूँकि नॉर्मन्स की अपनी ज़बान फ्रेंच थी, उन्होंने इंग्लिशमैन को फ्रेंच बोलने पे मजबूर किया और इस तरह फ्रेंच 1731 तक इंग्लैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज रही। Now before we discuss literary trends of Middle English period, two things need to be mentioned here. Number 1, anonymity, and number 2, alliterative verse transformed into rhymed verse. Under these two markers, trends go ahead. Histories. Histories are recorded set of past events. For instance, Vase Roman de Brute. Romances, the icon of Middle English period. Take for instance Sir Gawain and the Green Knight, full of adventures of chivalry and love. Miracle plays. Miracle plays dramatize biblical stories. It is also known as a mystery play. For instance, Sophocles' Antigone. Then comes morality plays. Morality plays discuss the forces of good and evil, the position of man, the castle of perseverance, wisdom, mankind, every man, and the pride of life. Fables. Fables are short tales. Characters are animals acting like human beings. They have a moral lesson. For instance, Chaucer's Nun's Priest's Tale. And the last but not least, allegories. Allegories have two coherent meanings, one apparent meaning and one underlying meaning. Allegory is basically a story within a story. Take, for instance, the owl and the nightingale. Figures of Middle English period. William Langland, John Gower, and Geoffrey Chaucer, the pioneer of English poetry. दूसरी तरफ, A Vision of Piers the Plowman. This book sheds satire on the religious practices of that time. विलियम लैंगलैंड अपने प्रोटैगनिस्ट प्रॉफिट के जरिए गुड और इवल को डिफाइन करता है। इसका प्लॉट उस एज के क्लास स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द घूमता है। प्रोलॉग में ऑथर अपने आप को मई की एक सुबह मेलबर्न हिल्स के करीब सोए हुए पाता है। वहाँ हर्मेट्स, मर्चेंट्स, जस्टिस, बेगर्स, पिलग्रिम्स और फ्रायर्स आते हैं। वो देखता है कि सब अपने अपने काम को जा रहे हैं। वहाँ एक बादशाह के आने की आवाज़ सुनाई देती है। बादशाह कब आएगा इसको जानने के लिए वहाँ मौजूद रैट्स और माइसेस एक बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं, मगर बाद में उन्हें अंदाज़ा होता है कि ये तरीका अच्छा नहीं, सो वो उस प्लान को डिफाई कर देते। एंड फॉर चौसर, 3 phases of writings are there: in French, in Latin, and in English. Coming straight to English.
two writings are there: The Legend of Good Woman and the Prologue to the Canterbury Tales. And finally the Prologue to the Canterbury Tales. Why did Chaucer write it? What was his purpose? It was the mere and real description of life as it was. मुनीर हुस्न बातनी को देखता नहीं कोई, मताए चश्म खो गई लिबास की तराश में. Language. Chaucer used rhymed verse. He economizes French decasyllabic or heroic line in stanzas as well as rhymed couplets. When that April with his shows suit, the drought of March hath burst to the root. अप्रैल का महीना है. 30 पिलग्रिम्स थॉमस बैकेट के श्राइन के लिए निकलते हैं. प्लान ये था कि हर पिलग्रिम 4 कहानियां सुनाएगा, 2 आते हुए और 2 जाते हुए, 2 जाते हुए और 2 आते हुए. प्रोलॉग में चौसर 2 हैं, एक एज अ पिलग्रिम और दूसरा एज अ पोएट. चौसर हर पिलग्रिम की पर्सनैलिटी को तफसील से बयान करता है. लेट अस डिस्कस. क्लासेस. 3 classes were there: Piers, fighters, and masses. Then comes humours. According to Galen, 4 types of humours were there: phlegmatic, choleric, sanguine, melancholic. And last but not least, personality. पर्सनैलिटी के 4 डोमेन्स हो सकते हैं. हर डोमेन की बुनियाद पिलग्रिम के क्लास और ह्यूमर पे होगी. The first is psyche, emotions, actions and reactions, and then comes appearances. Since appearances are often deceptive, चौसर ने psyche को पहले, emotions को दूसरे, actions और reactions को तीसरे और appearances को आखिर में डिस्कस किया.